Hello everyone. Welcome to Engineers Career Group and myself Prasoon. And from last 5 to 6 years, I'm teaching for ISRO GATE, DRDO, and other state and national level examination. So this video is ये वीडियो जो है आपके लिए कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट से है एंड कंपाइलर डिजाइन में वी हैव टू फाइंड द टर्म दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एंड फॉलो. ओके. सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉलो हम बेसिकली पाते हैं टॉप डाउन पार्सिंग में. ठीक है, व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग टॉप डाउन पार्सिंग, सो उस टाइम पे हमें फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द एलएल ऑफ वन. ओके, सो दैट पार्ट विल बी कंसिस्टिंग द फर्स्ट एंड फॉलो. ओके, सो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कैसे किस तरीके से फर्स्ट एंड फॉलो में आए और क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसके. ठीक है, तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है. तो आज मैं उन कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा सो दैट कि आपको कभी भी किसी भी फर्स्ट एंड फॉलो प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको. एंड बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट कंपाइलर डिजाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड students who are preparing for GATE 2025, they can join our batch, and where we will be covering the syllabus. We will be covering the long syllabus concepts, syllabus plus all the concepts, important concepts, and weekly test will be conducted. Weekly test and monthly test will be there, and along with that, PYQ solutions. We will solve each and every problem of the PYQ, and lastly, we'll take the mock test also. Okay, so in this way you can prepare better for GATE 2025. तो जो बच्चे GATE 2025 की prepare कर रहे हैं, this is the best time to start and do practice a lot of questions. Okay, so start करते हैं आज का कॉन्सेप्ट. तो आज के कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है? फर्स्ट एंड फॉलो. ठीक है, तो why we need this first and follow? What is the concept of this first and follow? Okay, so if we say what it mean by first, first means what? Any production, कोई भी अगर production दिया है, let's say A B C दिया है, ठीक है, तो this is called as a production. तो we know VTPS, that is variable terminal production, and this is what? Start symbol. This is a start symbol. Okay, so this is our start symbol, and this P means what? Production. Okay, so this P means production. So can we say this is our production? Yes, we can say. So this is our production. ये एक production है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं फर्स्ट ऑफ ए क्या है, तो इस प्रोडक्शन का सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट. ओके, बट देर आर सम कंडीशन. वहां पे क्या होगा? कुछ कंडीशन होगा. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं? We can say non-terminal. Okay, also we can say non-terminals. So what are these variables and what are these terminals? Terminals and non-terminals. Okay, so non-terminal हमारा क्या हो सकता है? In short, अगर कोई प्रोडक्शन दिया है, let's say A is equals to A B C दिया है, ठीक है, so what are the terminals and what are the non-terminals here? So we can say non-terminals are what? Here capital A, capital B, and if any start symbol is there, capital S, that will be included in the non-terminal. And terminal means what? If we are including some what kind of symbols. Okay, so any symbol, either it can be comma, whether it can be open bracket, whether it can be closed bracket, whether it can be a symbol, a special symbol like dollar or this hash symbol. So these all will come in terminal. Along with that, और क्या आएंगे इसके अंदर? स्मॉल लेटर लाइक लोअर केस लेटर्स. तो लोअर केस लेटर आर व्हाट? ए बी सी एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो दीज ऑल विल कम इन टर्मिनल एंड दिस ऑल विल कम इन नॉन टर्मिनल. ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पे कोई प्रोडक्शन अगर हमारे पास है, अगर कोई भी प्रोडक्शन है, लेट्स से वी हैव अ प्रोडक्शन. सो फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट, for finding the first we have to see the production. Let's say अगर हमारे पास कोई starting production है, so let's say S tends to AB, let's say S tends to ABC. Okay, and similarly we have to take A tends to capital small a epsilon, and B tends to small b, C tends to small c. Okay, so these are what? A set of productions. Okay, so when there are production, these are what? Productions. So जैसे ही प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हमें, अगर हमें हर
हर नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम किस एलिमेंट्स का निकालते हैं? सबसे सबसे पहला हम फर्स्ट किस एलिमेंट्स का निकालते हैं? तो ये जो सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं सारे, बीस, इन सब एलिमेंट का हमें क्या निकालना होता है? फर्स्ट निकालना होता है। कभी भी हम टर्मिनल का फर्स्ट नहीं निकालते हैं, हमेशा किसका निकालते हैं? नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालते हैं। तो मेक इट एज अ पॉइंट, ओके, पहली चीज। Now, if we have to find the first, so you need to remember 2 points. Okay. First one is what? First one is what? If a production is something like A tends to small a. Okay. So what is this? A क्या है यहाँ पे हमारा? A is what? Non-terminal. And B, A यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये terminal है. तो terminal is accepted. Okay. Terminal is always accepted. And अगर हमारा A tends to ए का होता, ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ए? द फर्स्ट ऑफ ए इज ए इटसेल्फ, ओके। लेट्स से यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, सम अदर सिंबल, ओके। सो ए टेंड्स टू बी ए समथिंग रिटन, दिस इज अ लेटर प्रोडक्शन। यहाँ पे ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इट इज अ व्हाट? In this case, it is a non-terminal. Okay, and this non-terminal will not be accepted as the first element. Okay, always the terminal symbol will be accepted. ठीक है, हमेशा टर्मिनल सिंबल एक्सेप्टेड होगा। तो अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनल है तो इसका कोई ना कोई प्रोडक्शन होगा, बी का कोई ना कोई प्रोडक्शन होना चाहिए। तो बी का प्रोडक्शन फिर हमें देखना होगा, बी का प्रोडक्शन क्या है? सो बी का प्रोडक्शन यहाँ है, बी टेंड्स टू बी। सो बी टेंड्स टू बी हमें क्या दे रहा है? अल्टीमेटली हमें क्या दे रहा है? It is giving our terminal symbol. So always we need to select the terminal. So ऐसा अगर केस आता है तो then we have to do like that. Okay. So हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके अंदर कंडीशन देखेंगे क्या क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ we have some production may be something like that. If I say like say this example only. So अगर हमारे पास A tends to epsilon का प्रोडक्शन है तो epsilon will be placed, epsilon will be reduced to that production. Starting production में हम उसको reduce करेंगे and then also we have to consider the first of S. Okay. So what I mean, let's take an example of this example what we have taken here. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? ये चार प्रोडक्शन है। हाउ मेनी? चार ही प्रोडक्शन है। Can we say only 4 production? No, here are 5. Here 5 productions are there. Okay. So कौन कौन से प्रोडक्शन है? Can we say यहाँ से दो प्रोडक्शन निकल रहे हैं? Yes. A tends to A and next प्रोडक्शन क्या निकल रहा है? A tends to epsilon. ये दो हमारे प्रोडक्शन निकल रहे हैं यहाँ से। तो टोटल कितने प्रोडक्शन हुए? We have 5 productions. Okay. So now the first of S. If we are finding first of S, so you remember what I told you in the रूल, व्हाट हैपेंस इन द रूल। तो फर्स्ट ऑफ एस मतलब क्या हुआ? एस का फर्स्ट क्या होगा? तो एस का फर्स्ट हमेशा क्या इंक्लूड करता है? पहला एलिमेंट। तो एस का फर्स्ट, ठीक है। तो एस का फर्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? इट इज इट इज व्हाट? अ नॉन टर्मिनल। इट इज अ नॉन टर्मिनल। तो ए इज व्हाट? नॉन टर्मिनल। तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ए। ओके, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ए। तो एस का जो पहला है, फर्स्ट क्या है? एस का फर्स्ट क्या है? यहाँ पे नॉन टर्मिनल है। तो जब नॉन टर्मिनल होगा तो हमें इस नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालना होगा, नॉन टर्मिनल फर्स्ट, ठीक है। अब नॉन टर्मिनल फर्स्ट क्या होगा? जो भी होगा, जो भी टर्मिनल होगा वही क्या होगा? इसका एस का फर्स्ट होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, so what we can write here? So first of S, what is the first of S? First of S is here A. So A का production क्या है? A is here. And what is the first of A? First of A is small a. Yes, we can consider. So first of S is what? A, comma. And what another production it is giving? It is giving one more production. So this is what dividing. So dividing and showing you there are two production, दो production है. So A tends to epsilon. So epsilon is also included in first. So this is what the first of S. I hope the concept you got. Okay. Similarly, अगर हम A की बात करें तो A का अगर प्रोडक्शन हमें देखना है तो A के पास कितना होगा फर्स्ट एलिमेंट? तो डेफिनेटली इट शुड बी हैविंग व्हाट? टू प्रोडक्शन एंड दैट इज द फर्स्ट। सो A का फर्स्ट क्या है? यहाँ पे A है, स्मॉल a, दैट इज अ टर्मिनल सिंबल। एंड यहाँ पे भी क्या है? A एप्सिलॉन है। So we can include here A comma epsilon. Okay.
सिमिलरली अगर हम बी का फर्स्ट बात करें तो बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इट दिस इज एलिमेंट बी, तो वी नीड टू राइट हियर बी। ओके, सिमिलरली सी का फर्स्ट क्या है, तो सी का फर्स्ट क्या है हमारा, दिस एलिमेंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फर्स्ट, finding the first. Okay, so always note that point. What will you point should have? Epsilon is always epsilon is always included in the first, but not in the not in the follow. Okay, so we will discuss later what is mean by follow. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फॉलो। नाउ अब एक फर्स्ट फॉलो करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड द फॉलो, हाउ टू इवेलुएट द फॉलो। ओके, so if you say like we have some production, let's say we have some production we have some production, and that is let's say S tends to B, B, and C, D, and similarly B tends to A, B, epsilon, and similarly C tends to C, C, and epsilon. So these are the productions. Okay, we need to find the first. We need to find the first, and along with that first, we need to find the follow. तो व्हाट वी कैन डू हियर, फर्स्ट एंड फॉलो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला एस के लिए जो मैंने फर्स्ट आपको बताया कि एस का फर्स्ट क्या हो सकता है, तो एस का फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ध्यान दें तो एस का फर्स्ट क्या है यहाँ पे, एस का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी, दिस बी। So this B is what? A non-terminal. Okay. So when it non-terminal, then we have to go see the production of B. So where is B? B here. तो B का फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ए है, क्योंकि बी के पास कितने प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन है। एक प्रोडक्शन क्या है, बी टेंस टू ए बी, एंड दूसरा प्रोडक्शन क्या है, बी टेंस टू एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन होगा। सिमिलरली सो दिस फर्स्ट ऑफ बी शुड बी इंक्लूडेड इन दिस एस। ओके, so can we write here what, a, okay, comma b, okay, so where this we got this b also, okay, so a and b, and साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। और एप्सिलॉन के साथ साथ हम अगर एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, लेट्स से नो, वन सेकेंड, यस, सो नॉट दिस एप्सिलॉन हियर राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें, हमारे पास जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट ऑफ बी क्या आया है, ए आया है, ठीक है, एंड बी, फर्स्ट ऑफ बी इज व्हाट, आल्सो द एप्सिलॉन। ओके, so what we can write here, epsilon, along with that a b, and how we got this b also. Okay, so यहाँ पे देखो b का प्रोडक्शन, यहाँ epsilon, it is referring to this production. Okay, see the difference. जब भी हम स्टार्टिंग सिंबल से कोई चीज रेफर कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम इसका प्रोडक्शन रेफर कर रहे हैं, इन दैट केस वी डोंट हैव टू इंक्लूड दिस एप्सिलॉन टू दैट पर्टिकुलर सिंबल, इस सिंबल के लिए हम नहीं इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ बी का पता कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू इंक्लूड द एप्सिलॉन, दैट्स व्हाई वी डोंट इंक्लूड एप्सिलॉन हियर। Okay, although it is the first of b, epsilon is what, nothing, we don't have to include this, but point is what, यहाँ पे S tends to BB है, ठीक है। We know B is a production, B is having the production, B tends to epsilon। तो ये epsilon अगर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हुआ, epsilon इसकी जगह सब्स्टिट्यूट, which is what, a null, which is what, a null, then S का फर्स्ट क्या होगा, then S का फर्स्ट मतलब ये डिस्कार्ड हुआ, तो S का फर्स्ट क्या होगा हमारा, this B। So that's why I have included this B। Clear? Okay, so next, what is the first of S? Another something. So S is having two productions. Okay. So S is having two production. What production is having? First one is S tends to B, capital B and small b, and similarly this S is having two production, that CD. So पहला production ये रहा, तो पहले हमने जो पता लगाया था that is what, A, B, ये हमने किससे पता लगाया, फर्स्ट प्रोडक्शन से, यहाँ से, ठीक है, substituting the value and checking all those। सेकेंड प्रोडक्शन कौन सा है, S का ये है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, दिस इज अ नॉन टर्मिनल, सो वी कैन राइट हियर
it is a non-terminal, then it has to check the production. Where is that production? Here is this production. तो इसका फर्स्ट क्या है? इसका फर्स्ट क्या है? C है. ठीक है? So we need to include this C. Okay. Similarly, C is also giving epsilon value. So when this epsilon value is substituted here, what will happen? This value will become discarded. ये यहाँ पे क्या होगा? ये value discard होगा. And then what is the resultant? Resultant is D. So we need to include this D. क्योंकि ये जब डिस्कार्ड होगा तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा? डी होगा, सिर्फ और सिर्फ डी होगा. गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस. सो दीज आर व्हाट द फर्स्ट ऑफ एस. सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑफ बी पता करना है, नाउ सी द कॉन्सेप्ट. सो बी के लिए मैंने क्या बोला? बी के पास कितने प्रोडक्शन है? हमारे पास दो प्रोडक्शन है. तो इन दैट दोस टू प्रोडक्शन वी हैव टू कंसीडर दिस फर्स्ट ए एंड दिस एप्सिलॉन. So what are the terms will be included here? A and epsilon. Okay. Similarly, C का अगर बात करें तो C के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो C के लिए बेसिकली पहला टर्म क्या है यहाँ पे? स्मॉल c and this is epsilon. So both we need to include here. Okay. Similarly, if we have to take the follow, okay, तो follow के लिए हम क्या करेंगे? तो follow का concept ये होता है कि we some input buffer we have, okay. So in this initial symbol will be always the dollar, okay. So anything when this input buffer is used, when input buffer is used for parsing के लिए जब input buffer हम use करते हैं तो सबसे पहला symbol जो present रहता है, this is called as a end symbol. Okay, so can we say it is a end symbol? End symbol. ठीक है. तो ऑलवेज फॉर द स्टार्टिंग स्टेट, स्टार्टिंग मतलब कोई भी प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से एस टेंस टू क्या है? बी बी है. तो यहाँ से ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा पास थ्री जनरेट हो रहा है. तो इस दिस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट ऑलवेज देयर विल बी डॉलर सिंबल विच रिप्रेजेंट द करंट पोजीशन, करंट एलिमेंट्स ऑफ दिस इनपुट बफर. ओके, तो इनपुट बफर में कुछ भी नहीं है तो दिस डॉलर शुड बी इंक्लूडेड. सो ऑलवेज फॉलो दिस डॉलर टू दिस फॉलो. ओके, तो स्टार्ट सिंबल हमेशा क्या कंसीडर करेगा? एक डॉलर सिंबल हमेशा अपने साथ कंसीडर करेगा, ऑलवेज इन एवरी केस. ओके, सो व्हाट इज द एस? सो ऑब्जर्व दिस प्रोडक्शंस. तो यहाँ पे अगर ये प्रोडक्शन देखें तो इसके प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में ऑलवेज वी नीड टू सी फॉर फाइंडिंग द follow. Okay. We need to see the right hand. This is LHS side and this is RHS side. So we have to see this right hand side. So if I write the production here C D, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सारे प्रोडक्शन में कहीं भी राइट हैंड साइड में क्या नहीं है? S नहीं है. ठीक है, दैट इज द नॉन टर्मिनल. S नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो in that case what we have to do? We have to see this RHS side and no S is there, so only the dollar symbol will be the follow. Okay, कोई भी हमारे पास नहीं है. What happens when we find the another follow sequence of any other symbol? तो उस केस में हम देखेंगे अभी. तो सबसे पहला मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट फॉलो हमें पता करना है बी एलिमेंट का. तो वे आर टेकिंग दिस बी एलिमेंट एंड टेकिंग एज बी एलिमेंट हम पता करेंगे इसका फॉलो क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी को हम ध्यान से देखें, इस प्रोडक्शन में बी कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पहला प्रोडक्शन देखें, अगर हम ये पहला प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे बी आ रहा है. आरएचएस साइड हमारा ये है. यस, तो पहला बी हमारा कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आरएचएस साइड में. और बी किसको फॉलो कर रहा है? इट इज फॉलोइंग द which element? It is following the terminal symbol. Okay, so this will be included. Okay, remember terminal is always included but non-terminal is not included. Okay, so terminal को हम include करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? terminal B आएगा. ठीक है, तो follow of B is what? B is following something what? This terminal symbol. So B will be the final answer. So anywhere else B is there? Yes, here it is B. Okay, so in this case what we have to do? So production is something like that, A or B. क्या यहाँ पे B किसी को फॉलो कर रहा है? This is the end. Okay, this is the end. अब B किसको फॉलो कर रहा है? B is not following anything. Okay, so this is the end of this production. ठीक है, जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है B के? तो B के दो प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहे हैं. एक ए बी आ रहा है और दूसरा क्या प्रोडक्शन आ रहा है? B टेंस टू एप्सिलॉन आ रहा है. तो ये पहला प्रोडक्शन अगर हम कंसिडर करें तो इसके आगे कुछ भी नहीं है. तो व्हाट इट डज? It will go back. It will go back to its parent. Okay, and check whether it is having any production earlier. So B is having what? No other element is there. So B
only B will be there, the follow. Okay. Now, when we say about C, okay, तो C के लिए क्या होगा? C कहाँ पे exist कर रहा है? तो C is existing here. Okay, so C is existing here. So what is the follow of C? Follow of C is what? D, and this D is what we say terminal symbol. So we include this D. Okay, so this is what the first and follow. Okay, first and follow concept, the basic concept of first and follow, and in this way we need to find the first and follow. Okay, so there are some more cases if we have the production like epsilon. Okay, so what happened in that? So already we have discussed in case of epsilon. ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्शन में एप्सिलॉन है, अब फर्स्ट हम पता कर रहे हैं, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट करके और उसके बाद उस एलिमेंट का हमें फर्स्ट कंसीडर करना होता है. ठीक है. Now, if I say something like S tends to, let's say B C is there, and here B is having the production A or epsilon. ठीक है. So what is the meaning of that? अगर हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, अगर हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो this S first of S is what? First of S निकाल रहे हैं, first of S अगर निकाल रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे? This is what our non-terminal. Okay, so non-terminal, it will go back and check the first of B. So first of B is what? A. So we include A here, no problem. But there is a production, यहाँ पे एक और production है B का. B का production क्या है? B tends to epsilon. So when this epsilon will be substituted here, then what will happen? Then what will happen? This will become null and void. Then we have to consider this production first. Okay, so consider we have one more production here, C tends to B. अगर हमारे पास C tends to B है, then हमें इस C के प्रोडक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये null and void है, because अगर हम epsilon सब्स्टिट्यूट करें तो this will become null and void. Then we have to first of S is what? C, and C का प्रोडक्शन क्या है? B. So we have to write here B. So first of S is. So this is a case scenario. This is a case scenario. तो केस सिनेरियो अगर ऑकर होता है तो हम इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. So I hope you got the concept. What is the first? What is the follow? And in what way we can calculate? So there are so many PYQs. So many PYQs has been asked in first and follow. And this first and follow will be used in so many parsing techniques. तो पार्सिंग टेक्निक में हमें ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे. जब भी हम पार्सिंग कर रहे होंगे, चाहे वो हम बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हो, चाहे वो हम टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हो, तो किसी भी पार्सिंग में ये फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट हमें मस्ट एंड शुड आना चाहिए. ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द टू क्रिएट दैट टेबल. ओके, सो दैट एल ऑफ वन टेबल और एल आर ऑफ जीरो टेबल. सो लाइक दैट टेबल हमें क्रिएट करने के लिए एस एल आर हुआ या एल आर हुआ या कैनोनिकल सी एल आर हुआ. So those concept being this concept is very very useful in that. Okay. Now one more thing I'd like to tell you. Some more terms are there. Okay, along with first and follow. So augmentation, like some terms are there. Augmentation. So what do you mean by augmenting a grammar? Okay. So when we are telling the augmentation of some grammar, okay, means what? We are introducing the new production. Okay. So कभी भी ये टर्म आपके पास आए, दिस इज एडिशनल ऑफर लाइक एडिशनल नोट फॉर यू. लाइक व्हेन वी आर ऑगमेंटिंग सम ग्रामर, हम क्या करते हैं? एक प्रोडक्शन को ऐड करते हैं. ठीक है, हमेशा एक प्रोडक्शन में एक ऐड होता है, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल. ओके, so this is what finding the first and follow. Let's say we have some example also. We will take a short example for that, and let's say how we can find the first and follow in that case. Okay. So similarly, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? Let's say we have production. Let's say we have another example. Example. So example, some production, something like say S tends to A, B, C, D, E. These are all capital. Okay, so A tends to A or epsilon, and similarly B tends to B or epsilon. Similarly C tends to small c, and similarly D tends to D or epsilon. Then E or epsilon. Okay, so these are what the production. Okay, we need to find the first
and we need to find the follow. We need to find the follow. So what we do here? What we do here? सबसे पहला हम S स्टार्ट सिंबल है हमारा, तो सबसे पहले S के लिए फर्स्ट निकालेंगे. So what happened with the when we start with the S? तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला क्या है. एस का हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट क्या होगा. एस के आगे क्या फर्स्ट है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ए. तो ए का हमारे पास क्या है, ए इज अ नॉन टर्मिनल. व्हेन नॉन टर्मिनल वी हैव टू गो टू ए प्रोडक्शन. ए प्रोडक्शन पे जाएंगे और ए का फर्स्ट देखेंगे. फर्स्ट क्या है हमारा ए का, दिस स्मॉल ए. सो वी नीड टू इंक्लूड दिस ए. गेटिंग. नेक्स्ट आफ्टर दैट एस का एस का फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ए है. ए का प्रोडक्शन क्या था, ए था. लेकिन ए का एक और प्रोडक्शन है. कौन सा प्रोडक्शन है, एप्सिलॉन. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस एप्सिलॉन हियर, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस. फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा, दिस बी. ओके. सो बी का प्रोडक्शन यहाँ पे है, तो बी के प्रोडक्शन को भी हमें इंक्लूड करना होगा. वी विल इंक्लूड दिस बी. सिमिलरली बी के पास भी क्या है, एप्सिलॉन है. ठीक है. तो सपोज करो वो सिनेरियो जब हमारे पास एस टेंड्स टू ए बी और सी डी ई लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये और ये दोनों टर्म क्या हो जाए, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन रिड्यूस कर लिया. अगर अगर इनकेस रिड्यूस कर लिया, तो ये की दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड. देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ एस विल बी व्हाट, सी. तो सी का प्रोडक्शन क्या है, स्मॉल सी. सो वी नीड टू इंक्लूड दिस सी. ओके. आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. नाउ सी का कोई भी एप्सिलॉन नहीं है, तो अगर ऑल्दो ए भी एप्सिलॉन हुआ, तो हम सी को कंसिडर कर सकते हैं. सी का प्रोडक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑफ एस. सिमिलरली ए का फर्स्ट अगर हम देखें, तो ए का फर्स्ट क्या होगा, ए एंड एप्सिलॉन. वी कैन से फर्स्ट इज दिस प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज दिस वन. सिमिलरली अगर हम बी का देखें, तो बी का प्रोडक्शन क्या होगा, बी कॉमा एप्सिलॉन. ओके. सिमिलरली अगर सी का हम प्रोडक्शन देखें, तो सी का प्रोडक्शन क्या होगा, दिस इज कैपिटल सी. सो सी का प्रोडक्शन क्या होगा, ओनली सी. एंड नेक्स्ट हम डी का प्रोडक्शन देखें, तो डी के प्रोडक्शन में क्या होगा, डी एंड एप्सिलॉन. ओके. सिमिलरली अगर हम ई का प्रोडक्शन देखें, तो ई के प्रोडक्शन में क्या होगा, ई एंड एप्सिलॉन. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन. ओके. नाउ फॉलो. फॉलो में मैंने सबसे पहले बताया हमें कौन सा साइड देखना है, वी हैव टू सी द आरएचएस पार्ट. ओके. सो दिस आरएचएस पार्ट वी हैव टू सी, एंड वी हैव टू सी हियर क्या, कि यहाँ पे कोई भी एस सिंबल अराइज हो रहा है क्या, यहाँ पे फॉलो ऑफ एस है क्या, कोई भी एस किसी को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं. यहाँ पे कहीं भी एस नहीं है, तो ओनली वन symbol will be existing. Which one is that symbol? So always dollar symbol will be there. And यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, फर्स्ट में हमेशा हम एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं. वी हैव टू कंसीडर दिस एप्सिलॉन, बट इन फॉलो वी डोंट हैव टू कंसीडर दिस एप्सिलॉन. So next, if we have to write this a, let's say a tends to, and this a का अगर हम फॉलो देखें, तो a कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें a यहाँ लाई कर रहा है. a का फॉलो क्या है, b है. तो b का फर्स्ट क्या है, b का फर्स्ट क्या है. तो इन दिस केस देयर इज अ केस, जब भी हम फॉलो पता करते हैं, जब भी हम फॉलो पता करेंगे, तो व्हाट वी डू, इफ अ नॉन टर्मिनल इज फॉलोइंग द नॉन टर्मिनल, means non-terminal is there and following the non-terminal. So what we need to include, the then include include first of this non-terminal. Okay. तो फर्स्ट ऑफ दिस नॉन टर्मिनल हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हम ध्यान दें, फर्स्ट ऑफ दिस नॉन टर्मिनल, तो ए का फॉलो क्या है, बी है. ठीक है. तो बी का प्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट बी है, तो हम वी हैव टू राइट बी. एंड अलोंग विद दैट बी का एक और प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन है, दैट इज एप्सिलॉन. सो व्हेन दिस एप्सिलॉन इज सब्स्टिट्यूटेड, अगर हमने ये इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एक मतलब ए का एक किसको फॉलो कर रहा है, दिस इज सी. ठीक है. तो सी वी हैव टू कंसिडर. तो सी में हमारे पास क्या है, वी हैव फर्स्ट ऑफ सी इज व्हाट, सी. सेम कंडीशन आ रहा है, तो दिस कंडीशन इज व्हाट, ए बी सी. अगर यहाँ पे हमने एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस विल बिकम नल एंड वॉइड. देन व्हाट इज फॉलोइंग, दिस सी इज फॉलोइंग, तो वी हैव टू इंक्लूड दिस सी. सिमिलरली अगर हम बी के लिए प्रोडक्शन देखें, तो बी का हमारा क्या होगा फॉलो, तो वेयर इज दिस बी, बी इज हियर एंड सी यहाँ पे फॉलो कर रहा है. तो सी का फर्स्ट क्या है हमारे पास, दिस सी, तो वी हैव टू इंक्लूड दिस सी. ओके. सो नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन हियर फॉर सी. सी का कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे, तो वी डोंट हैव टू गो फॉर फर्दर. ओके. सिमिलरली अगर हम सी की बात करें, तो सी में हम क्या इंक्लूड करेंगे, लेट्स से सी का, तो सी कहाँ कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है. ठीक है.
तो हम देख सकते हैं सी किसको फॉलो कर रहा है, नॉन टर्मिनल को। तो नॉन टर्मिनल का फर्स्ट क्या है, दैट इज डी। तो वी हैव टू इंक्लूड दिस डी। एंड देन व्हाट, अगर इस डी का प्रोडक्शन एप्सिलॉन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता, तो वी हैव टू कंसीडर दिस ई आल्सो। ओके, तो ई का फर्स्ट क्या है, दैट इज ई। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी से, अगर ई का भी प्रोडक्शन एप्सिलॉन है, अगर मान लो डी और ई दोनों एप्सिलॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये कहाँ जाएगा, सी किसको फॉलो कर रहा है, सी किसी को नहीं फॉलो कर रहा है। तब उस केस में दिस दैट इज केस नंबर टू। ओके, so this was case number one. So case number two, when nothing follows, suppose a production is something like A, B, C, and after C it is not following anything, then it has to go to the parent. It will ask to the parent, it has to go to the parent, and then parent will say whatever follow is there with me। ठीक है, तो parent का जो भी फॉलो होगा वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो पेरेंट का फॉलो क्या है यहाँ पे, पेरेंट का फॉलो इज डॉलर। So we need to include this dollar here also. Getting the concept? So this was the case 2. Okay. Similarly, अब हम D के लिए पता करेंगे। तो D का अगर हम पता करें तो D का क्या होगा फॉलो, वेयर इज दिस D, D is here। तो D का अगर हम यहाँ पता करें, सो डी का फॉलो क्या है, ई है, ई का फर्स्ट क्या है, ई है। तो वी नीड टू इंक्लूड दिस ई। सिमिलरली ई का एक और प्रोडक्शन है, क्या है, ई टेंस टू एप्सिलॉन। तो अगर हमने एप्सिलॉन इसके प्लेस पे प्लेस कर दिया, तो डी किसके पास जाएगा, इट हैज टू आस्क टू द पेरेंट। ठीक है, तो दिस इज द केस। अगर ए बी सी डी है, तो डी के पास ई है, ई अगर एप्सिलॉन हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, इट हैज टू आस्क टू द पेरेंट दैट वेयर इज माई फॉलो। ओके, सो इट हैज टू आस्क टू द पेरेंट। So when it will ask the parent, what will happen? Parent or whatever parent is having follow, it will give to this element. ठीक है, तो parent के पास जो भी है, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, डॉलर इंक्लूड हो जाएगा। Similarly for E, so what is the follow of E? तो E का फॉलो क्या है, E का फॉलो कुछ भी नहीं है, तो इट विल गो बैक टू द पेरेंट, एंड इट विल गो बैक टू द पेरेंट, एंड पेरेंट बोलेगा जो भी मेरे पास फॉलो है यू शुड टेक इट। ओके, सो इट विल ऑलवेज इंक्लूड अ डॉलर। ठीक है, so in this way we need to find the first and follow। I hope you got the concept, and this way is very useful way to find the first and follow concept। okay, तो आपको कभी भी फर्स्ट एंड फॉलो में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। Okay, so many PYQs include those parsing techniques and everything included in first and follow concept। Okay, so I hope you got the concept। आपको concept समझ में आ गया होगा, and you will be scoring at least 1 to 2 marks if first and follow questions come। So this is all about the first and follow in the compiler design। Okay, I think आपको clear हो गया होगा concept, and I'll see you in the next video। Thank you for watching, and if you are preparing for GATE 2025, then definitely हमारा batch आप join करो, and I'll teach you all those concepts much more clearly with clarity। Okay, so thank you so much for watching this। Thank you so much। I'll see you in the next video।